Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10 NTSC MTSC, 6th and 9 Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Garkhera, Aurangabad, or call 95112 or 95112 66680. Students, how are you? Hopefully all of you are fine. Let us move towards our topic, that is introduction to matter. Okay, in previous lecture we have discussed about what is meant by chemistry, what is meant by matter, and the properties of matter. हमने properties देखे matter के, matter का introduction हमने किया, matter किससे composed होता है ये हमने देखा. Now we are moving towards to study the physical states of matter. Okay, so let us see. Physical state of matter. So before explaining the physical state of matter, I am giving here example of three substances which are used in day to day life. Day to day life में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर day to day life में हमें हमारा इंटरेक्शन होता है. ठीक है, the first one is iron. Second one is water, and third one is oxygen, or you can consider it as air also. Okay, iron के बहुत सारे utensils होते हैं. Utensils मतलब, what is meant by utensils? Utensils are nothing but the substances which we are using for different purposes. Okay, substances, iron utensils like for example पैन हो सकता है, या फिर कोई भी जो डे टू डे लाइफ में हम चीज, टेबल हो सकता है, ठीक है, ग्रिल्स हो सकते हैं, तो वो आयरन से बना होता है. वाटर इज देयर एंड ऑक्सीजन एंड एयर दैट वी हैव टू स्टडी हियर, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है. ठीक है, सो व्हाट बेसिक डिफरेंस यू कैन ऑब्जर्व व्हेन यू कम अक्रॉस दिस थिंग्स. ओके, क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? ठीक है, आयरन और वाटर में क्या डिफरेंस है? आयरन, so you can see that iron is iron having a firm structure. Okay, iron does not need any sort of container to hold it. Okay, but you can observe that water cannot be free at the ground, or it requires some sort of container to hold it. Okay, and air is everywhere. Okay, air is everywhere. So what is the basic difference between these three? Okay, we can consider that iron is solid, water is liquid, and oxygen is gases. Okay, so from these three examples you can understand that what we are going to study ahead. Okay, that is, we have to study the physical state of matter, solid, liquid, and gas. So before explaining the physical states, okay, I also want to explain that the physical state depends upon some factor. Okay, and that two factors you have to remember all the time. Okay, and these two factors are temperature and pressure. ये दो जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, and this temperature and pressures are responsible for the intermolecular forces between the particles. Okay, so what is meant by intermolecular forces? What is meant by particles? Particles, we know that matter is made up of very small tiny particles. Okay, these particles may be atoms, ions, molecules,
Okay, then intermolecular forces. Intermolecular forces means there are some forces which hold these particles together. Yes, definitely all of you know that. Okay, we have to apply a force to hold any object or to push any object. Okay, हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए या फिर अपने से दूर ढकेलने के लिए. यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो एक पार्टिकल को एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं. ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एंड दीज अट्रैक्शंस आर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये अट्रैक्शन टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो ये तो अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो हायर क्लासेस होंगे अपने 6-7 क्लासेस में मैं आपको क्या करूंगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होते हैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. फिलहाल में हम क्या करेंगे, अभी हर एक फिजिकल स्टेट की स्टडी करने की कोशिश करेंगे डिटेल में. ठीक है, डिटेल में मतलब उनकी प्रॉपर्टीज हमें लर्न करने हैं. आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर. ओके, सो लेट अस सी. So the first is solid state. So what is meant by solid state? Which state you can consider as a solid state? It is the physical state of matter in which particles are compactly packed with each other. Okay, so solid state is the physical state of matter in which particles are compactly packed with each other. Let us move towards the properties of solid state. Okay, solids. Okay, so the first one is particles are compactly packed with each other. Okay, particles क्या होते हैं, compactly pack होते हैं. No intermolecular forces, no intermolecular spaces between the particles. Okay, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं रहने वाला. Why? Because those are compactly packed with each other. You can see that the pen is solid, okay, made up of very small tiny particles, but you cannot see any gap. Okay, so it is very minute if there is a gap, but it's so minute that we cannot visualize between them. हम visualize नहीं कर सकते. No intermolecular space between the particles. Hence solids are रिजिड एंड हार्ड. इसीलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं. ठीक है, देन सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं. हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, देन therefore solids have definite shape and volume. Okay, तो सॉलिड्स को क्या होता है, डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. सो आई एम रिपीटिंग द सॉलिड स्टेट अगेन हियर. ओके, सॉलिड स्टेट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ ईच अदर. ओके,
then the intermolecular spaces between the particles are very small, or we can consider that there is no intermolecular space between the particles. Therefore solids are rigid and hard. उसकी वजह से solid क्या होता है, rigid होता है, hard होता है. Solids are incompressible. What is meant by compression? Okay, compression means by applying the pressure we can reduce the size, but we cannot reduce the size of the solid. If we try such things, okay, solid get cracked. Okay, solid crack हो सकता है, ठीक है, या फिर rupture हो सकता है. So solids are incompressible. हम उसको compress नहीं कर सकते. Solids have definite shape and volume. As the particle, there is no particle space, solids are rigid and hard. Therefore solid do not change their shape and do not change their volume until the external force applied on them. जब तक उन पर कोई external force क्या नहीं होता है, apply नहीं होता है. Okay, so this is all about the solid state. Okay, now we are moving towards the liquid state. Okay, so let us see what is meant by liquid state. So second one is liquid state. How you can define the liquid state? It is the state of matter in which particles are loosely packed with each other. Okay, it is known as solid state. So what is solid state? Where the particles are loosely packed, there is no strong interaction between them. Okay, so let us see the properties of liquid state. Properties of liquid state. Okay, weak interaction between the particles, second one, no definite shape. Okay, but gain the shape of container in which they are kept. Okay, मतलब जिसमें हम उसको रखते हैं लिक्विड को, उसी का शेप. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास में वाटर रख दिया तो ग्लास का शेप आएगा, बकेट में रख दिया बकेट का शेप आएगा, कप में रख दिया कप का शेप आएगा. ठीक है, have definite volume. Okay, मतलब लिक्विड्स को क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ओके, लास्ट वन, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. See here, though the weak interaction, but those are incompressible. Liquids are viscous and considered as फ्लूइड्स. हम उसको एज अ फ्लूइड्स भी कंसिडर करते हैं और विस्कस भी होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. व्हाट इज मीन बाय विस्कस, आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जांपल रिगार्डिंग टू दैट. सो होपफुली all of you get those points regarding to the solid and liquid state. Okay, gaseous state and the viscosity we will learn in the next lecture. Okay, for today it's okay. Thank you very much.
Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is the IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680.